Bismillah Rahman Rahim. Myself, Dr. Bashir Amanur, laparoscopic surgeon. Today we are having a young male of 25 years old presented with severe pain in the right iliac fossa for the last 3 days. And we planned, there was a tenderness positive 18,000 TLC count. So my suspicion before surgery was the perforated appendix. So planned for the diagnostic laparoscopy, and now we can see that there is an adherent appendix to the right anterior lateral abdominal wall, and it's a perforated gap. How to perform a laparoscopic appendectomy in such kind of complicated cases? The most of the time, laparoscopic appendectomy is, in case of simple cases, is not a difficult job, but in such cases where the we have to appreciate all the structures and identify the mesoappendix, base of appendix is a difficult job. So its momentum which was adherent to the appendix, and now we will slowly adenolize the appendix from the abdominal wall. Close kरेंगे. Before going to start the procedure, let me introduce my team. Myself, Dr. Bashir, Mr. Hasnan, my camera assistant today, Mr. Shoaib, our anesthesia assistant, and Mr. Kalban is actually recording the case, and Mr. Muzammil is on the backup. So why we should do the laparoscopic appendectomy in case of such cases? Because in open cases there is a lot of chances of infected wounds in open appendectomy, such kind of gangrenous appendix. So I always prefer laparoscopic appendectomy is the best option for such kind of gangrenous appendix and infected perforated cases. So here I am using the normal saline as a hydrodissection. Bit by bit I am going to separate the appendix from the adhesions here. Actually we are recording the case in a natural way कि थिएटर में कैसे किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और आपको किस तरह ओटीए तंग करते हैं, ठीक है, आपके ओटीए असिस्टेंट. तो ये सारी चीज़ें बीइंग अ सर्जन जो हमारे सर्जिकल फील्ड के लोग हैं दे वुड लव एंड एंजॉय के साथ साथ आपके असिस्टेंट भी क्या क्या आपके गुल खिलाते हैं वो भी आप देखें, ठीक है. So here we are able to appreciate the actually the appendix starting from the tip going down, and here is the base. So there is a little bit adherence. Close eye beta. So here you can appreciate the iliac vessels, okay, and there is adherence over here. Watch the camera. Table up करें थोड़ा सा और. Say this case is our first case of today's list. So our boys are little bit lazy and lethargic. So we have to activate our boys as well. तो इंशाल्लाह अगले केस में ये मुझे ज़्यादा तंग नहीं करेंगे. So up till now हमने काफ़ी हद तक एडियंस को ब्रेक कर लिया है, ठीक है. ये यहाँ से अब हम we will start our dissection. बेटा सलाइन डालें, जल्दी करें. अच्छा, my dissection from the tip of appendix, and I will separate the mesoappendix bit by bit from the tip of appendix by using the monopolar cautery. Monopolar cautery is safe. Most of the people always try to use bipolar and the ligature. We have bipolar, we have ligature, but I would love to do dissection with the monopolar using the Maryland. इसमें जो मेरे रिफ्लेक्सेस है उसमें मुझे ये बड़ा इजी रहता है कि I will hold the mesoappendix bit by bit, coagulate and then proceed. तो ऐसे बहुत सारे दोस्त जिनके पास लिगाश्योर और बाइपोलर नहीं है, you can try with the monopolar as well. I have done more than 500 cases with using the monopolar as a cautery,
and with controlled energy. थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन ये इफेक्टिव है. So here you can appreciate that I am actually coagulating the mesoappendix. तो जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा भी ब्लीडर हो आप उसको पकड़ के you can coagulate it, and it's very effective. And you know, ligashore is very costly. Bipolar is less costly, but monopolar is available in all kind of theaters, so you can use the monopolar. And why we should opt for the lap appendix? Because in such cases, and most of the time the cases get infected whenever we deliver the appendix through the wound, and it may get infected, and later on seroma and the purulent discharge from the wound is a major issue. So I actually completely left the open appendectomy, and I always try 99.9% I should proceed with the laparoscopic appendectomy. चाहे जैसी भी है, जिस तरह की भी appendix है, I always try to perform lap appendectomy. ड्यू टू मोनोपोलर क्वार्टरी आपका थोड़ा सा एरिया फॉगी हो जाता है, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा पोर्ट साइड को ओपन कर दें तो आपकी जो फॉग है वो abdominal कैविटी से बाहर निकल आएगी. तो देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम. So we are getting close to the base of appendix, so we will be very careful. Up till now the dissection is going good so far, and a little bit of mesoappendix remains. There is a difference between using the ligashore here and the bipolar and the monopolar. With the tip of Maryland, it's quite easy to hold the small bite of tissue like this and burn it or coagulate it. Okay? So that's why I would love to do appendectomy with the monopolar attached to the Maryland. यहाँ पे आपकी जो लिगाशोर की बाइट है वो इस तरह से इतनी अच्छी बाइट नहीं बनती, और आपका टिश्यू हैंडलिंग इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है. सो we are close to the base of appendix, and here actually I'm deliberately using the sucker because I thought there is the base of appendix is little bit away. So hydrodissection will help me here. If there is a little bit ooze, you can coagulate using the monopolar again here. I'm not satisfied yet, and still I will use. We are having a smart guy, Dr. Ilyas Saab, focus on as an anesthetist. Yes. Today, sir, हमारे साथ looking like a smart guy, Dr. Ilyas Saab.
is the most experienced person at Jung as a consultant anesthetist. Little bit use है इसमें आप no need to worry. You can apply. So there's a little bit difficulty in applying the energy here, but also I will be succeeding. Okay, here is the tinea coli. Okay, this is the base of appendix, and I'm going to apply a knot over here. Wait. Micron. I'm applying pyridine to reduce the friction, and needle को हम कट कर लेंगे यहाँ से. I will use the index finger of my assistant for making the intracorporeal Mishra knot. First hinge, second hinge, third. थोड़ी सी नॉट को मोटा करने के लिए मैं एक और एक्स्ट्रा ले लेता हूँ. ये हाफ इंच है, and then again it's the lock. It's the final lock. So the only one principle always remember that the knot should move forward, not backward. अगर आपकी नॉट बैकवर्ड भी आ रही है तो वो लूज नॉट है और आपने वो अप्लाई नहीं करनी, उसको चेंज कर लें फौरन, नहीं बना लें. ठीक है, ये थ्रेड मैं पहले से ही शॉर्ट कर रहा हूँ. सो वी हैव आवर इंट्राकॉर्पोरियल नॉट. अगेन यूजिंग द मेरीलैंड. इट इज आल्सो ए लिटिल टिप कि आपने नॉट को मेरीलैंड से पकड़ना है, मेरीलैंड की टिप से होल्ड करना है ताकि आपकी नॉट आगे पीछे ना हो. तो ये मैं नॉट यहाँ पे इंशाल्लाह थ्रो करूँगा. लाइट्स ऑफ कर दें ब्रदर. इट्स गैंग्रीनस अपेंडिक्स. लिटिल बिट आई विल स्क्वीज द एरिया ताकि साइड बन जाए नॉट की. होल्ड इट and it's a knot pusher. It's the study step, and I'm going to push the knot over here. Okay, always keep in mind that while pushing the knot you may get difficulty in the kind of problem. Could be you can take the wall of small gut. एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि उसमें नॉट को पुश करते हुए उसने गट की वॉल को पकड़ लिया था. ठीक है, स्लोली स्लोली अप्लाई, स्लोली स्लोली, स्लो फोर्स, एंड अप्लाई अ सस्टेन्ड प्रेशर. ठीक, here you can see the whitish line, whitish structure. Here is, it's a good sign for the good knot. So let me cut the threads. And most of the time in kind of such cases I always try to apply a legal clip above the knot. अगर हम knot के below लगाएंगे तो ये cut through कर देगा. तो above the knot to make your stumps more secure. ठीक है, now I will cut appendix and the threads. थोड़ा सा धागा बड़ा छोड़ दें. And now I will cut the appendix. तो ये आपको एक लैंडमार्क पे मिल जाता है कि भाई आप यहाँ से काट दें. ठीक है जी. So our stump is safe. Now it's time to deliver the appendix through the port side. Hold it. मोस्टली जो है ये अपेंडिक्स आपकी यहाँ से स्लिप हो जाती है. सो अंडर वीएन आपने इसको पोर्ट के अंदर लेके आना है, लाइक दिस. ठीक है,
So your whole of appendix tissue specimen is inside the port. Now I will remove the port. Okay, there is no in contact with the anti-abdominal wall, and now I am delivering the appendix. Okay. Now going back to the abdomen. जो आपने फ्लूइड अंदर वॉश किया है उसको, जो हाइड्रो डिसेक्शन के लिए आपने फ्लूइड यूज किया, अब उसको सक्शन करना है. ठीक है, ताकि आपकी पोस्ट ऑफ कोई कलेक्शन वगैरह ना हो. पेशेंट रिलैक्स करें. ओके. It took hardly 5 to 10 minutes. और I mostly perform my all lap appendectomy under general anesthesia, ताकि पेशेंट भी कंफर्टेबल हो और आप भी कंफर्टेबल रहें. So let's examine the surgical area. ठीक है. See, there is no active bleeding, no active ooze. There is a part of momentum. Mesentery, actually mesentery. And always try to relook your stump. Okay, it's quite fine, stable. Okay. No active ooze, alhamdulillah. And I'm not going to disturb this cut rope. Little bit adherent. Okay, fine. Pelvic cavity section. A little bit difficulty in you can encounter in the suction from the pelvic area. Pipe सीधा करेंगे. Okay. राइट साइड डाउन करें. आपका जो फ्लूइड लेफ्ट एलिकोसा, लेफ्ट की मॉर्सन पाउच और इन सारे एरियाज में जो फ्लूइड होगा, वो अब आपका जब आप राइट डाउन करेंगे तो आपका वो फ्लूइड सारा इधर आ जाएगा और आप उसमें सक्शन क्लियर कर लेंगे. सॉरी. लिवर साइड, हेड डाउन. The pelvic region. Okay. ठीक है. पेशेंट सीधा कर देंगे. हाँ जी. हेड डाउन और साइड सीधी. Little bit fluid. It can be absorbed by the peritoneum. Okay, fine. Intentionally, I'm actually covering the area where the appendectomy done, stump of appendix. With the momentum. Okay, चले head up. दिखाएं इस साइड से. ठीक है, all clear, almost. There's the fluids. ये वो फ्लूइड है जो हमने राइट साइड डाउन करवाया था, उसमें हमें मिला है.
आ गया हूँ, इधर दिखाओ बेटा, हेड आप करें। And these are the very important steps, and try to set all the fluids as you can do. ओके जी, हमने सेक्शन तकरीबन जितनी हो सकती हमने कर ली है। और माई कंसेप्ट इज दैट के मतलब जो हमारे यंग सर्जन्स हैं, जो लोग हैं जो थिएटर्स में काम करते हैं, सकर बंद बल्कि सकर इज वर्किंग, तो जो थिएटर के अंदर जो इन्वायरमेंट होते हैं, जो मसाइल होते हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, आपके साथ साथ उनका वो सोल्यूशन भी करना है। देयर आर सो मेनी वीडियोस on the net that edited videos having no problems in the videos, it's a perfect videos, perfect dissections. I don't believe on such kind of videos because these are the no doubt standard videos, but such जो आपकी प्रैक्टिकल केसेस हैं, जो प्रैक्टिकलिटी है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स फेस होते हैं और आपने उनको कैसे सॉल्व करना है, वो आपने थिएटर के दौरान। तो मेरा फोकस ये है कि हम उन चीज़ों पे काम करें जो हमारे रूटीन के थिएटर्स हैं, जो हमारे पाकिस्तान के थिएटर्स हैं, उनमें जो इश्यूज आते हैं। अब जैसे मेरा ये शक्कर बार बार मोल्ड हो जाता है, मुझे सेक्शन में प्रॉब्लम होता है। इनिशियली यू कैन सी दैट के आपका कोई फ्लोर नहीं था, लेकिन हमने देखें रिपोजिशंस की हैं, डिफरेंट पोजीशंस पे हमने पेशेंट को किया है अप डाउन, तो देखें आपका कितना फ्लोर इकट्ठा हो गया। तो ये आपने सारी सेक्शन करके क्लीन करके निकलना है ये ना। और हेपेटिक कलेक्शंस, इन कलेक्शन से आपने बचाना है। मर्सन पाउच में फ्लूइड है, जो सप्लिनिक एरिया में फ्लूइड है, पैराकोलिगेटर में फ्लूइड है, इनसे आपने बचाना है। तो ऑलमोस्ट वी हैव डन। ठीक है, ऑल सही। डिफ्लेशन is the specimen. It's a gangrenous appendix. So in my opinion, always try to opt for the laparoscopic appendectomy because के देखें मिनिमल इन्वेसिव है, कोई ओपन वुंड नहीं है, वो इन्फेक्शन रेट ना होने के बराबर है, तो बहुत अच्छी रिकवरी है। थैंक यू सो मच।